classes. All right. Uh, in today's session, we are going to discuss as to how are we going to start our preparations for the legal aptitude section, the legal reasoning section of CLAT. See, before we go to a war, it is always important that we plan ahead, right? We should have a plan in place. Also, the most important thing is we understand what battle we are getting into. So imagine a king, going for a battle. He would have made a plan, right? He would know what he's getting into, like how many soldiers are going to be there from the second, like from the other side, and how many soldiers do I have? What are my strong points? What are my opponent's weak points or my opponent's strong points? तो यही करना है हमको सबसे पहले जब हम जाना शुरू करते हैं ना, जब हम एक अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले उस एग्जाम को समझो, उस सेक्शन को समझो कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है. वंस वी अंडरस्टैंड कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या रखी गई है, देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, अब मैं इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करूंगा. And that is how we understand or we get to know that this is what my preparation strategy is going to be like. And that is something which we are going to discuss in today's session. Now, before we actually begin the session, let me very quickly uh, run all the features that an academy has to offer to you. You can access the class anytime, anywhere, either live or recorded. You have the opportunity to learn from the best educators and National Law University alumni. I myself am an NLU Ranchi alumni. I graduated in 2016, and since then I have been training students for various law entrance examination. A lot of students have gone to different law schools after being trained by me, and a lot have actually gone to the top law schools as well. You can access national mock tests and sectional tests. You get all the weekly events and your strategy sessions, your how you should be planning for your examinations. How during the course we'll also discuss what was my experience at National Law University was like. And the most important, you get access to unlimited quizzes, and you can also launch a quiz of your own along with your friends. So these are certain features that you get at an academy. So we have a one-year comprehensive batch for CLAT 2022, which is starting from 21st July, Wednesday, and the course would be run in Hindi as well as in English. You get 300 plus hours of live and recorded classes, 50 additional mock tests, weekly sectional tests, and monthly GK current affairs compendium. We also have a batch for the 2023 students, the beginners batch for CLAT 2023 students, which starts from Friday 23rd July, which the duration of the course will be for 2 years. The communication will again happen both Hindi maybe or English may. And here again, you have all the same features available to you: mock tests, live and recorded sessions, weekly sectional tests, and monthly GK and current affairs compendium. We have also extended our subscription offers, and the offer is valid till 16th of July 2021. If you buy the subscription for 12 months, you get an additional 2 months free. And if you buy the subscription for 24 months, you get an additional 3 months of subscription free for all the CLAT students. So hurry up, and you can use this platform to start your training. You can use my code, like I said in the beginning. You can use VAI10 for an additional 10% discount. These are the different fee that you will have to pay. All in all, in order to subscribe to the portal and to the course. So always remember, if you want to use, if you want to subscribe, you can use my code VAI10 to get an additional 10% discount. So a 12-month course costs 19,250. You apply my code VAI10 and you get a 10% straight discount on this fee. All right. You have a very, like I said, you have a very amazing feature where we will be taking live quizzes for the students, for all of you. And you can join this in 3 easy steps. You download an Academy app, you make a profile, you click on self-study and navigate to tests, you click on live quizzes, and then you can either host a quiz along with your friends, or you can participate in an ongoing quiz which are made by an Academy educators.
All right. You also have tests every week. So, Championship Mock for CLAT 2021, which is the largest scholarship test ever, uh, where you get various scholarships, is held every Sunday from 10 a.m. in the morning. And then you have weekly T20 tests, which are like 20 minutes practice revision sets for your everyday practice. And this is open for everyone, right? Fair enough. Tests for the week, if you're aiming to crack CLAT, you need to practice, right? And how do you practice? You have to take tests and you have to see how do you perform in the pressure situation. How well are you prepared? That is how you get to know that what are your weak areas, what are your strong areas. Now, every Friday, 4 to 5 p.m., you can take the Unacademy Law Aptitude Test, 60 minutes, 60 questions, and 60 marks. All right, now let us come to the topic of what we are going to discuss today. So सबसे पहले ये समझते हैं कि पैटर्न को समझते हैं, क्लैट के पैटर्न को समझते हैं. तो क्लैट का जो पैटर्न है ना वो काफी डिफरेंट है. बाकी सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम से क्लैट का पैटर्न काफी डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि क्लैट ने अपने पैटर्न में एक चेंज लाया था 2020 में, wherein they said that rather than giving straightforward questions, we will make this a little difficult exam. They reduced the number of questions from 200 to 150. अब 150 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चंस तो रिड्यूस कर दिया, बट दे मेड इट मोर वर्बोस. अब आपको क्लैट के पैटर्न के पेपर में, क्लैट पेपर में आपको काफी पढ़ना पड़ता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड. सो इफ वी लुक एट the if you look at the pattern, then you will find certain passages given to you. Now these passages are somewhere around 350 to 400 words. At an average 400 words पकड़ के चलते हैं, ठीक है. Now 400 words is like काफी ज्यादा होता है, और ऐसे ये सिर्फ एक नहीं होते हैं, ये करीब 8 ऐसे पैसेजेस होते हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये करीब 3200 वर्ड्स जो है आपको सिर्फ लीगल सेक्शन में पढ़ना पड़ता है. अब इस पैसेज से फायदा क्या होता है, या ये दिया क्यों है? क्योंकि इस पैसेज में आपको लीगल प्रिंसिपल्स दिए होंगे. अब वो लीगल प्रिंसिपल्स आपको समझने हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज लीगल प्रिंसिपल्स एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग दोज लीगल प्रिंसिपल्स अपॉन अ फैक्चुअल सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू यू. So with every passage, they will give you 5 to 6 questions, right? I have just given, so this is just a demarcation that I have done. 3 question नहीं होते, 5 से 6 questions होते हैं per passage, ठीक है? So this is how the pattern looks like. Let us do some calculations here. Now, if we look at CLAT 2021 paper, the total number of words, the total words in that paper was 17,800 words, which was like 40 pages. 40 पेजेस आपको 120 मिनट्स में पढ़ना होता है. और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ के उसको अटेम्प्ट भी करना है. आपको पढ़ना है, आपको समझना है और आपको आंसर करने हैं. सो दिस इज समथिंग विच मेक्स द ओवरऑल प्रोसेस और ओवरऑल एग्जाम अ लिटिल डिफिकल्ट. आप प्रिपेयर करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो. सो क्लैट जो है, क्लैट का जो नया पैटर्न है वो आपके स्पीड को, आपके एजिलिटी को और आपके प्रिपेयर्डनेस को, आपके अवेयरनेस को टेस्ट करता है, ठीक है. सो इट नाउ लेट अस एक्चुअली लुक एट सर्टेन मोर कैलकुलेशंस. नाउ लीगल रीजनिंग सेक्शन 13 पेजेस का था. अब ये 13 पेजेस अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी रीडिंग स्पीड शायद उतनी तेज ना हो कि हम पूरा 40 पेजेस पढ़ के समझ के अटेम्प्ट कर सकें, राइट? And that might actually be a problem for us. And that is actually what the problem is with 95% of the CLAT takers. This is just a rough number that I'm giving. Majority of the students face this problem that they are unable to read through the entire paper. There is a trick involved. There's a very simple trick that हम over the course of our course, मेरे अगले क्लासेस आप अटेंड करोगे तो मैं उसमें आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे बहुत आराम से, बहुत तेजी के साथ पढ़ के जाना चाहिए ना. अभी एक चीज हमको ये समझ में आया कि आप बोलोगे कि सर ने तो कहा था कि यार ये तो पैसेज दिया हुआ है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तो वही होता है. सो इट्स लाइक 13 पेजेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. द आंसर इज नो. लीगल रीजनिंग सेक्शन इज नॉट लाइक अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश. इट इज वेरी डिफरेंट. इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी कि कहाँ से पैसेज पूछे जाएंगे.
लीगल रीजनिंग सेक्शंस में आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हो, लाइक एडुकेटर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जनरली कहाँ से आते हैं. सो अगर हम कैलकुलेशंस देखें अपनी, तो 3 मिनट होता है हमारे पास पर पेज के लिए. 3 मिनट्स के अंदर हमको एक पेज कंप्लीट करना है, और समवेयर अराउंड हमारे पास 80 सेकेंड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो 80 सेकेंड्स में यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, frame your answer, and come to a conclusion whether you want to go ahead with the question or you don't want to go ahead with the question, right? So this is ideally what you do uh, in an overall CLAT pattern question. Now let us look at this passage. Okay, अब ये एक पैसेज है जो कि 375 वर्ड्स का है. मैंने आपको कहा था ना 350 to 400 वर्ड्स के बीच का एक एवरेज रहता है. 375 वर्ड्स का एक पैसेज है. अगर इस पैसेज को हम देखें अभी, जिसको कि मैं आपको टाइम भी दूंगा पढ़ने के लिए, सो डोंट वरी, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही है जो हमने कभी शायद सुनी नहीं है. सॉरी, इनमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी नहीं सुनी है. रेस जुडिकाटा हमने नहीं सुना है, कि पता नहीं ये क्या ही नया टर्म आ गया, राइट? ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, एक ऐसा नया आ गया है ये. उसके बाद कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी बात कर रहे हैं, राइट? ये आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 ओरिजिनल पिटिशन समथिंग समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट. देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ स्पीकिंग ऑर्डर, राइट? व्हाट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर हमको नहीं पता. अब देखो, इसका आंसर भी कहीं दिया भी नहीं है पैसेज में. अगर आप when you go through this entire passage, you will not find as to what is the speaking order. They have not answered it, but it could be a very valid question that they can ask you, right? This brings me to the point that I was trying to drive home, कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह आप इसको नहीं देख सकते हो. आपको लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे, आपको लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और जब आपके पास अवेयरनेस होती है लीगल प्रिंसिपल्स की, तब आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? सो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है लॉ का, जो कि सिविल केसेस में एप्लीकेबल होता है. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ. हाउ डज दिस वर्क? सो सपोजिटली देयर इज अ केस दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन two parties, right? There's a case between A and B. Now A और B में एक केस चल रहा है, and this case is happening in Pune, ठीक है? Now A has filed this case against B in Pune. B lives in, say, Mumbai. Now what B does is B files the case against A in Mumbai. Same matter, same dispute, same parties. So the cause of action है, the reason कि क्या dispute हुआ था, वो reason भी same है, and because of this he files this case in Mumbai. Okay. Now पुणे में जो केस फाइल हुआ था, this has been decided. ये decide कर दिया. Court has come to a conclusion. The court has decided that and the court has decided in A's favor here. Correct? अब B के फेवर में डिसाइड करता तो B वापस से केस तो फाइल नहीं करता ना. सो A के फेवर में पुणे के कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. नाउ B goes to Mumbai and he files the same case in the courts of Mumbai. And again, एक चीज और याद रखो, यहाँ पे जो कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सिमिलर लेवल ऑफ कोर्ट है, सेम पावर्स के कोर्ट है, जैसे सिविल कोर्ट में, ठीक है? सिविल कोर्ट पुणे एंड सिविल कोर्ट मुंबई, ठीक है? तो बी ने जाके मुंबई के सिविल कोर्ट में वापस से केस फाइल कर दिया. तो ये, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? अब ऐसे समझो कि द प्रॉब्लम हियर इज वेरी सिंपल, दैट इफ दिस कीप्स हैपनिंग, अब इसके बाद मान लो यहाँ पे मुंबई में बी के फेवर में केस आया, डिसाइड हुआ, देन व्हाट विल ए डू? ए विल अगेन फाइल दिस, से मे बी इन पुणे. This keeps going on. There will be no end to it. लोग पार्टीज एक दूसरे को परेशान करने के लिए, लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा. एक दूसरे को परेशान करने के लिए they'll keep filing the same case in a similar kind of jurisdiction of the courts.
Now, in such cases, in order to stop this from happening, the framers of the the law, the civil procedure code, जो हमारे legislators थे, they thought कि we need to bring, we need to get, like there has to be an end to litigation, right? अब वो end कैसे आएगा litigation पे? When we say that कि अगर same cause of action है, मतलब the same reason है जिसके कारण कि आपका dispute arise हुआ है, between the same parties है, uh, on the same matter, on this under the same title, अगर ऐसा सब कुछ same है, तो you cannot file a case in a different court which has a jurisdiction because the matter has already been decided. तो एक बार लग जाता है. बार का मतलब होता है स्टॉप. लॉ आपको स्टॉप करती है कि आप वापस से वो केस नहीं फाइल कर सकते. ठीक है. What can you do? You can appeal. आप अपील में जा सकते हो टू हायर कोर्ट. सो अगर सिविल कोर्ट का हायर कोर्ट से पुणे में इज और इन महाराष्ट्र इज द बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दो. सो बी कैन गो एंड फाइल एन अपील इन द बॉम्बे हाई कोर्ट. लाइक उसके सुपीरियर कोर्ट पे जाओ, सेम कोर्ट लेवल पे मत खेलते रहो, अदरवाइज इट बिकम्स टेबल टेनिस या लॉन टेनिस जैसा. You keep shuttling from here and there, and there is no like result that comes out of it, right? तो इसको stop करता है law, and that is what is called as the principle or the doctrine of res judicata. ठीक है, यही ये पूरे पैसेज में बात कर रहा है. अब उसके बाद हम एक और बात करते हैं that general doctrine of res judicata is based on the public policy and therefore cannot be treated as irrelevant or inadmissible even in dealing with fundamental rights in petitions filed under Article 32 of the Constitution of India. अब भाई आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तो उसको एनफोर्स करने के लिए आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे. हम कैसे, अब आप मेरे को बोलोगे, आप मुझे क्या पता ये, लाइक दिस इज अ वेरी न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, आई हैव नो क्लू. डोंट वरी, डोंट पैनिक, मैं आपको हर एक चीजें पढ़ाऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. विल कम टू कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल ओवर द कोर्स ऑफ द क्लासेस दैट आई टेक. मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाऊंगा. सो डोंट वरी. ठीक है. तो अभी हमको ये समझ में आया कि ओके ठीक है, तो एक रिट पिटिशन भी होता है अंडर आर्टिकल 32 जिसके कारण कि आप जाते हो. See, the idea of giving you or showing you that this is the passage of the actual paper, right? The actual paper, इसको देख के डरना नहीं है कि अरे मुझे कुछ आता नहीं है, हम आराम से सीख लेंगे ये सब. ये बहुत ही सिंपल है. लॉ डिफिकल्ट नहीं है, लॉ का बस लैंग्वेज डिफिकल्ट है. एक बार लैंग्वेज समझ आ गया ना, उसके बाद understanding law or having the knowledge of law is very very simple, right? So we will get to understand all of it. So basically they are saying that even it's not just with civil courts, the principle of res judicata does not apply only to civil courts, but it also applies to higher courts like the high courts of the state as well as the supreme court. ठीक है? That is exactly what they are talking about. Okay. Now let us look at the questions that they have asked. Now the questions that they have asked are very simple. The passage was very difficult, but the questions that have been asked are very simple. The first question they ask is, which of the following is res judicata applicable to? And मैंने तुम्हें अभी आप लोगों को अभी just बताया है कि res judicata सिर्फ एक सिविल सूट पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक रिट पिटिशन अंडर 32 and 226 of the constitution के लिए भी applicable होता है. So since both A and B are correct, therefore our correct answer is D, both A and B. And हमने एक नंबर secure कर लिया CLAT में. Comes the second question. Doctrine of res judicata is applicable to writs if the decision is on merits, the order is a speaking order, both A and B, or neither A or nor B. अब इसमें अब देखो, ये तो कहीं पे पैसेज में दिया भी नहीं था. दे हैड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट मेरिट्स ऑफ द केस और स्पीकिंग ऑर्डर. ये सब क्या है? तो अब ये है ना, ये आपका नॉलेज है.
And where do you gain this knowledge? You gain this knowledge here. You come, you attend classes at Unacademy platform, and you will get these knowledge कि आप बहुत better तरीके से prepared रहोगे in order to take your examination, right? ठीक है, अभी मैं आपको quickly ये बताता हूँ कि decision on merits और speaking order का क्या मतलब होता है. Speaking order का मतलब होता है reason provide करना. If the court has provided the reason for the order that it is giving, ठीक है, then we say that it is a speaking order. कई सारे orders होते हैं जहाँ पे reason नहीं दिए जाते हैं, and there is no need actually कि आप उनको कोर्ट को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट हर बार हर चीज़ के लिए रीज़न दे. उसको लगता है कि रीज़न देना इम्पॉर्टेंट है, जनरली देते हैं, जनरली दिया भी जाता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑल द टाइम, राइट. देयर आर इंस्टेंसेस जो हम बाद में समझेंगे कि कहाँ पे वो नहीं देना ज़रूरी होता है. सो अगर रीज़न दिया है, ठीक है, कोर्ट ने अगर रीज़न दिया है तो उसको हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं. सो स्पीकिंग ऑर्डर इज़ अ मस्ट फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. वाई? बिकॉज अगर मुझे रीज़न ही नहीं पता है तो हाउ डू वी एक्चुअली चैलेंज और हाउ डू आई एक्चुअली नो दैट इट्स करेक्ट. सेकेंड इज ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. मेरिट्स का मतलब क्या होता है? मेरिट्स ऑफ द केस का मतलब होता है कि केस को सुनने के बाद, लाइक एक केस फाइल हुआ, ठीक है, नाउ दैट केस हैज बीन फाइल्ड एंड there are a lot of things, like it takes time to decide a case, as you all must be aware of. थोड़ा समय लगता है. अब जब केस स्टार्ट हुआ ना, तो हो सकता है कि मैंने जाके कोर्ट को प्रे किया, आई प्रे टू द कोर्ट दैट in the meantime, till the time that you come to a final conclusion, stop the other party from doing more harm to me. Correct? So what the court does, the court says to the other party that all right, let us decide this matter. You are not going to change your position, like you are not going to do anything that is going to harm Vaibhav. ठीक है? So ये मेरिट पे नहीं डिसाइड किया गया, दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद नहीं डिसाइड हुआ. ये बस इस बात पे डिसाइड हुआ, ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन पे डिसाइड हुआ कि हाँ, अगर जिस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, इफ द कमोडिटी ऑन विच द डिस्प्यूट इज वही चेंज हो गई, तो देन हमारे जजमेंट का, हमारे ऑर्डर का लास्ट में, एंड में कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा. ठीक है. And now supposedly the dispute is with respect to a car, and if the court in the interim, in the meantime, does not say कि देखो भाई रुक जाओ, you are not allowed to sell the car, nor are you going to drive the car beyond so much, or say more than 500 kilometers or whatever, you're not going to do that. So here they have not decided it on merits after hearing कि whether Vaibhav has a title, whether Vaibhav is the owner of the car, or person X is the owner of the car. नहीं, ये सब नहीं सुना. उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करके रखो. So if the decision is on the merits after listening to the entire dispute, then we know that everything has been decided. Correct? The decision has been reached. The decision has been reached on the basis of hearing both the parties. That is important. So therefore, doctrine of res judicata is applicable to the writs. Writs are the commands which the High Court or the Supreme Court can issue. So it will be applicable to the writs only when it is both when it is both A and B, that the decision is on the merits as well as the order is a speaking order. ठीक है? तो ये करेक्ट आंसर है. 2 नंबर आ गए हमारे क्लैट में. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा बेस्ड अपॉन? हमने समझा था बेस, लाइक रेस जुडिकाटा किस पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट एक फाइनलिटी आनी चाहिए, वो डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए, राइट? ओके, अभी मैं देख पा रहा हूं that there should be an end to litigation. Absolutely correct. ये एक प्रिंसिपल है. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दैट फाइनलिटी शुड बी अटैच्ड टू द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट. ये भी सही है.
कि भाई कोर्ट के डिसीजंस को एक फाइनलिटी होनी चाहिए, एक लिटिगेशन जो है, डिस्प्यूट जो है, कोर्ट लिटिगेशन इज बेसिकली कोर्ट डिस्प्यूट्स, जो कोर्ट का केस है वो खत्म भी होना चाहिए. सो बोथ ऑफ देम, सो बी एंड सी आर करेक्ट. If both of them are correct, then A also has to be correct because there is an option called as D. So therefore, our correct answer is all of the above. तो हमने एक ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं. I saved time. मैंने टाइम सेव किया विदाउट इवन रीडिंग ऑप्शन ए. तो कई बार क्या होता है ना, हम इधर से छोटे से ऑप्शन से भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हमको कई बार आंसर्स मिल जाते हैं और वी सेव टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट you save time. Okay, now we come to the next question. Which of the following is correct? अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस ही काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये पढ़ने में मेरे को टाइम लगेगा ही लगेगा. और ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, सो ये फोर्थ क्वेश्चन है. इसके बाद एक और क्वेश्चन है. आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस करेक्टली. अब मेरे को 2 क्वेश्चंस के लिए शुड आई डू दिस, और मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले थोड़े छोटे वाले को देख लेता हूँ, उसके बाद इधर आता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि जो मेरे आंसर ऑप्शंस हैं ये सब जो है थोड़े छोटे छोटे हैं, राइट. So therefore, let me look at the factual scenario. Mr. X was dismissed from service by his employer after a proper inquiry. Mr. X challenged his dismissal in High Court by a petition under 226 of the Constitution of India. However, High Court dismissed the petition, citing Mr. X has an alternate remedy available. X took recourse to the alternate remedy before the appropriate forum, but Mr. X's legal action is opposed by the employer on the basis of res judicata. Based on these facts, which of the following is most appropriate? Okay, now High Court ने यहाँ पे देखो, important point is High Court ने petition dismiss किया, right? They have dismissed the petition साइटिंग कि आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, आपके पास दूसरा रिकोर्स है, रादर देन कमिंग टू हाई कोर्ट डायरेक्टली, यू हैव अ डिफरेंट ऑल्टरनेट रेमेडी. ठीक है, क्या ये मेरिट पे डिसाइड किया गया? द आंसर इज नो, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड अपॉन मेरिट्स. ये एक खाली प्रिलिमिनरी जजमेंट था. सो जब मैंने मेरिट पे डिसाइड किया नहीं, और हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि मेरिट्स और स्पीकिंग ऑर्डर, रीजनड ऑर्डर दोनों होना चाहिए. रीजन ऑर्डर तो है, मैं ये मान लिया कि भाई इनने एक रीजन दिया है कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, दैट इज व्हाई वी आर डिसमिसिंग, दिस इज द रीजन दैट दे हैव प्रोवाइडेड. बट हैज दिस बीन डिसाइडेड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस? नो, दे डिड नॉट सी, दे डिड नॉट हियर व्हाट मिस्टर एक्स हैज टू से, दे डिड नॉट हियर व्हाट द एम्प्लॉयर हैज टू से. मेरिट पे तो डिसाइड हुआ ही नहीं, तो रेस जुडिकाटा कैन नॉट बी एप्लीकेबल. सो ए तो चला गया, तो रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल कैन बी अ करेक्ट आंसर. अब देखो, इसमें एक और चीज आती है, जब भी हमारे पास एक ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, बोथ बी एंड सी, तो वहां पे बहुत केयरफुल हो जाना कि भाई बी सही है, अब लेट मी लुक एट ऑप्शन सी ऑल्सो वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. Since the matter relates to livelihood and life of the person, technical rules of res judicata should not be applied. Okay. अब ये हमको ना कितना भी सही लगे, है ना, कि हम हमारा कॉन्शियंस जो है वो कहे कि someone's life is at stake. If he does not have a job, he will not be able to provide to his family. He will not be able to do anything for his family, etc. etc. So हमारा कॉन्शियंस कहता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि भाई रूल ऑफ रेस जुडिकाटा को नहीं अप्लाई करो. एंड दिस इज समथिंग विच यू डोंट हैव टू डू. यू डोंट हैव टू थिंक फ्रॉम योर कॉन्शियंस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट द लॉ सेज. द लॉ इज वेरी क्लियर. द लॉ वेरी क्लियरली स्टेट्स टू यू दैट वन थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हो रहा है, टेक्निकल रूल्स क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज मेरिट्स पे डिसाइडेड नहीं है. दिस इज नॉट अ लीगल आंसर, दिस इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल आंसर. सो हम फैक्चुअल आंसर्स को इग्नोर करेंगे. ठीक है, हमेशा याद रखना कि फैक्चुअल आंसर्स जो होते हैं ना, ऑप्शंस होते हैं, उनको इग्नोर करना.
फैक्चुअल आंसर्स को हम कब एक्सेप्ट करते हैं? जब हमारे पास कोई लीगल ऑप्शन बचता नहीं है, कोई हमारे पास लीगल आंसर है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीगल आंसर स्ट्रेट अवे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इज रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो हमने ये सब कुछ थोड़े टाइम में सॉल्व किया, राइट? अब अगर मेरे को स्टार्टिंग से रेस जुडिकाटा के बारे में पता है, मुझे आर्टिकल 32 एंड 226 के बारे में पता है, तो मैं कभी भी इस पूरे पैसेज को पढ़ूंगा नहीं। बिकॉज इफ मुझे नहीं पता होता और मुझे सॉरी अगर मुझे नहीं पता होता इस पैसेज के बारे में और मुझे पूरा ये 375 वर्ड्स पढ़ना पड़ता, तो पहले आई वुड हैव टेकन दोस 2 minutes or 3 minutes to read the passage. Whereas, remember the calculation that we did. In 3 minutes, you have to complete one leaflet, one page. That one page has this passage and 3 other questions. तो हमारा स्पीड जो है वो डिपेंड करता है कि हमको नॉलेज कितना है। नाउ यू मे से दैट सर हम पूरा लॉ पढ़ के तो जा नहीं सकते एग्जाम में, और आपको पढ़ना भी नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड बिकॉज यू आर गोइंग टू अ लॉ स्कूल, यू विल गो टू अ लॉ स्कूल वेयर यू विल रीड ऑल दीज थिंग्स। तो करोगे क्या, कैसे करेंगे? सो जो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो कि रिक्वायर्ड है आपको इस स्टेज पे पढ़ने का, वो हम पढ़ाएंगे। So you keep following me. Subscribe to Unacademy channel, the Unacademy YouTube channel. Subscribe to it. Uh, Press the bell icon. Whenever any educator goes live, you will get to know about it. You can sit, study, learn, ask your doubts, ask your questions. Feel free to comment as well to our videos and show us how you feel about it, and do show us some love by sharing and liking our video. हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।